आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास फॉर एनी मॉलिक्यूल विच इज गिवन टू अस। कोई भी मॉलिक्यूल हमें दी रहे तो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसकी यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग, व्हाट वुड बी द यूनिट, ये सारी चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। बिल्कुल छोटी सी क्लास होगी मगर बहुत ही कंसेप्चुअल और इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। ओके, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए भी आपको मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू की आवश्यकता होगी। उससे पहले यदि आपने मोल कंसेप्ट रिगार्डिंग मेरी जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो पहले जाकर आप प्लीज़ उसे देख लें। बेसिक्स ऑफ मोल कंसेप्ट मैंने समझा रखा है अच्छे से कि व्हाट इज़ वन मोल, व्हाट इज़ अ मोल कंसेप्ट, बेसिक्स चीज़ें मैंने कवर कर रखा है, तो आप प्लीज़ जाकर पहले उसे देख ले, उसके बाद आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीख लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? ओके, वी नीड टू नो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जानना बहुत ही ज़रूरी है। दीज आर सिंपल कंपाउंड्स, तो आपको पता होगी, मगर थोड़ा हटके या फिर थोड़ी अलग कंपाउंड आपको दे दी जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? सो दिस इज गिवन टू अस। नाउ हाउ डू वी अप्रोच? सो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जितनी सारी एटम्स होंगी वो भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। कंसिडर द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर देयर in this particular molecule. So in this molecule of carbon dioxide we have one atom of carbon and two atoms of oxygen. तो हम कैसे लिखेंगे? One atom of carbon. So 12U is the atomic mass of carbon. We will just write 12U or AMU, whatever. Nowadays we use unified mass, so it is 12U plus ऑक्सीजन कितनी है? दो ऑक्सीजन है यहाँ पे, वी हैव टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड atomic mass of one oxygen is 16U. So we'll write down 16U multiplied by 2. Okay, यहां तक आपको समझना पड़ेगा. For one oxygen atom, I'm repeating once again, for one oxygen atom, it is 16U. Now we have two oxygen atoms over here, so it will be 16U into 2, which is 32U. So 12U plus 32U, we have 44U. So the molecular mass of carbon dioxide, so the molecular mass of carbon dioxide is 44U. Okay, molecular mass of carbon dioxide is 44 AMU और 44U, 44U भी लिख सकते हैं. Okay, now look, in the class of mole concept, I have discussed that 1 mole, okay, agar if we take the corresponding mass of this, okay, gram molecule mass you can say, so यदि हम 44 gram of CO2 लेते हैं, so that will have 1 mole of CO2, right? So that we have discussed in the class of mole concept, तो आप पहले जाकर उसे जरूर देख लें. So 44 gram of carbon dioxide has 1 mole. Okay, so for this reason we can also write down the unit as 44 gram per mole. Okay, in 1 mole we have 44 gram, so the unit of another unit of molecular mass is gram per mole. So I can easily write down that molecular mass of carbon dioxide is 44 gram per mole. करेक्ट, ये हो गया हमारा. मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर मोल कंसेप्ट वाली क्लास को पहले देख लीजिए, उसके बाद इसे समझने में आपको बहुत बड़ी आसानी होगी, राइट? द नेक्स्ट इज वाटर, H2O. H2O, let's calculate the molecular mass of H2O. So molecular mass, capital M, of H2O is, we have 1U into 2 because the atomic mass of hydrogen is 1.007 U. Actually atomic mass of hydrogen जो है that is 1.007 U,
मगर for the sake of simplicity we can use 1u, not a big deal. Okay, and over here we have two hydrogen atoms, so I can write down this 1u is the atomic mass of one hydrogen atom, and we have two hydrogen atoms over here, so 1u into 2 plus oxygen कितनी है, एक ही oxygen है. We have one atom of oxygen only. Okay, so I can write down 16u, okay, which is the atomic mass of one oxygen atom. So I can add up 2u plus 16u, we have 18u. Okay, so the molecular mass of water is 18u, which is equal to 18 gram per mole. Okay, either of the unit we can use. AMU भी लिख सकते हैं, मगर nowadays we use U. So this is the molecular mass of 1 mole of water. Okay, so molecular mass of water which is 18 gram per mole. Okay, understood. चलिए एक और एग्जांपल देखिए molecular mass calculation is super easy, मगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के दौरान गलतियां हो जाती है बस. मैंने देखा कईयों को कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एग्जांपल दैट इवन दो इट इज़ वेरी इजी बट स्टिल मिस्टेक्स हैपन. तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से इसे कीजिए. आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखिए, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं होगी. ओके, बिकॉज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में काफ़ी चीज़ें जो है ना मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट होंगी. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. सो नंबर ऑफ मोल्स इज मास बाय मोलर मास और मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. सो इन सारी चीज़ों में मतलब मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू अगर गलत हो जाती है तो यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर, राइट. सो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए. ओके, तो चलिए अगले कुछ नेक्स्ट वी लेट्स कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन व्हिच इज CH4. ओके, मीथेन. So the molecular mass will be, we have one atom of carbon, so we'll write 12u, nothing to multiply it. We have four atoms of hydrogen. One atom of hydrogen has a molecular mass of 1u. Okay, so atomic mass of one hydrogen atom is 1u, and we have four hydrogen atoms, so it will be 1u into 4. So we have 16u or 16 gram per mole is the molecular mass of methane. Okay, तो ये भी आसान है. Okay, in this way we can calculate. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. आप पॉज कीजिए और इन सारी चीज़ों को लिखते रहिए, बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी सेड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ही काम की चीज़ है, न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत मददगार सिद्ध होगी. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट मॉलिक्यूल विल टेक इज ammonia, NH3. Okay, NH3. So molecular mass of ammonia will calculate. Nitrogen, we know atomic mass of nitrogen is 14u. Okay, and we have one nitrogen atom over here. And hydrogen कितनी है? 3. 1u into 3. So we will have 17u or 17 gram per mole लगभग, which is the molecular mass of ammonia. Okay, easy, बहुत आसान है कैलकुलेट करना, ट्रस्ट मी. ओके, बहुत ही आसान होती है इसे कैलकुलेट करना. नेक्स्ट लेट्स कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हिच इज HCl. ओके, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास. वी हैव फॉर हाइड्रोजन वी हैव 1u. क्लोरीन द एटॉमिक मास इज 35.5u. Okay, the atomic mass of one chlorine is 35.5u. There are no multiple atoms of such like that, so we'll simply add this up and we will have 36.5u or 36.5 gram per mole is the molecular mass of hydrochloric acid. So 36.5u or 36.5 gram per mole is the molecular mass of hydrochloric acid, right? So आसानी से हम लोग इसे निकाल सकते हैं. Now we have calculated the molecular mass of several compounds. Now अगर क्वेश्चन पूछी जाए, okay, suppose कार्बन डाइऑक्साइड से क्वेश्चन लेते हैं, how many, calculate the number of
moles, the number of moles in 70 ग्राम of कार्बन डाइऑक्साइड. अगर ये क्वेश्चन आपको पूछी जाए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 70 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, मैं फिर रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जाकर मोल कंसेप्ट वाली वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद आप ये जरूर देख लीजिएगा, राइट? सो हाउ कैन यू कैलकुलेट? ओके, इट इज वेरी सिंपल. तो in our last class we saw that number of moles is equal to mass by molar mass. ये हमने देखा था. Here we have molecule, so I can write down mass upon molecular mass. Molecular mass. Okay, so what is the mass given? Mass is 70 gram upon what is the molecular mass of, which is 44 gram per mole, which is the molecular mass of carbon dioxide. So 70 divided by 44, which will give us the number of moles for carbon dioxide. तो चलिए क्विकली कैलकुलेटर निकाल लेते हैं and let's see the calculation. इसे in order to save time, 70 divided by 44, we have 1.59 moles. Okay, 70 divided by 44 gram per mole. Okay, which is 1.59 moles. So what is the answer we got? 70 gram upon 44 gram per mole, which is equal to 1.59 moles of CO2. 70 gram of CO2 has 1.59 moles और लगभग 1.6 moles of CO2. Mass by molecular mass. Mass by molecular mass. Okay, this was mass by molar mass, but in molecule we can use this equation, right? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं. Okay, I am keeping the mass same, but I am changing the molecule, right? So same question. Find out the number of moles in 70 gram of HCl. 70 gram of hydrochloric acid में कितनी moles होंगी? How many moles are there in 70 gram of HCl? I kept the value of the mass same, but I will alter the molecule. Okay, now this will change accordingly. Now we will write the equation again. Number of moles is mass W by molecular mass. Mass upon molecular mass. So mass is given 70 gram. Now we are calculating for HCl. Now हम hydrochloric acid के लिए calculate कर रहे हैं. So we'll substitute the molecular mass of hydrochloric acid, which is 36.5 gram per mole. Okay, so we'll quickly use the calculator again. 70 divided by 36.5, which is equal to 1.91 moles. So 70 gram of HCl, hydrochloric acid, has 70 gram of hydrochloric acid has 1.9 moles of hydrochloric acid. Okay, so इसी प्रकार हम molecular mass कैलकुलेट करने के पश्चात number of moles भी कैलकुलेट कर सकते हैं by simply using the formula which we have just studied in our previous class. Okay, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा how to calculate molecular mass and number of moles. Okay, for any molecule which is given to you. Okay, so दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो से मदद मिलती है, आपको चीज़ें समझ में आती है, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. मैं मिलता हूँ आपको ऐसी कंसेप्चुअल वीडियोस के साथ. तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ.